Welcome, SIDAQ. Hello, sir. Good afternoon. Heartiest good afternoon, SIDAQ. Heartiest congratulations. Thank you, sir. So today we have SIDAQ with us. He has secured AIR 157 in this year's UPSC CSC. SIDAQ's journey is a classic example of how hard work, patience, perseverance, right? It pays off in UPSC because he has given multiple attempts, he has given multiple interviews, and finally he has found himself on the other side of the game. Welcome, SIDAQ. Thank you, sir. Uh, how are you feeling? Uh, Sir, I'm feeling relieved, happy, Feeling and grateful as well. So it's a mix of emotions at the moment, sir. so probably the feelings would have settled down by now. And Ye- Yes, sir. जब आया था रिजल्ट तब कैसा लगा था? Sir, actually, the first feeling that I encountered was that of relief. कि बस शुक्र है हो गया. As you mentioned, that it has been a very long journey. And slowly, as you see everybody around you being very happy, celebrating, so that becomes a source of happiness. You see your parents getting happy, your relatives, friends. So उनको देख के सर काफी happiness derive होती है. अच्छा लगता है उनको देख के. Exactly. More than us, obviously it's us as well, but more than us, it is when we see that all the stakeholders in this preparation, they are happy that finally things have turned out to be positive. Great, SIDAQ. SIDAQ, you have had a long journey. Uh, or a decent journey, I would say. Tell us something about your journey in brief. So sir, this was actually my sixth attempt. In my first three attempts, I was able to clear prelims. In my first two attempts, I was not able to clear mains. And in the third attempt, I was able to reach up to the interview stage, but I missed the final list by a few marks, 21 to be precise. And in my fourth attempt, I was not able to clear prelims. So it's the only attempt when I was not able to clear the hurdle of prelims. And in my fifth attempt, I was again able to reach up to the interview stage. That year, I missed the final cutoff by 9 marks. And in this attempt, sir, with God's grace, I secured rank 157. Great, SIDAQ. So multiple attempts, multiple means, multiple interviews, had a chance of not clearing prelims also at once. So you have seen everything in UPSC, right? And that Right. kind of makes us much more resilient, much more grateful to this, to this whole phenomena called UPSC, wherein everyone is almost equally placed in every attempt. Great. So, Siddhak, how long have you been associated with SOMP? Sir, I got associated with SOMP in 2021. I was Okay. part of the Hurricane batch as well, then the mains mentorship program and the interview preparation as well. Okay. So, and in what ways did SOMP help you, if it did? Sir, firstly, I think when it comes to the content side of the things in the mains mentorship program, I was also part of the thematic course, and it was the thematic course which helped me in value addition in quite a few areas, especially in the art and culture. I was not very thorough with the art and culture, but your lectures helped me quite a lot in that area. Besides this, sir, the Hurricane batch, I was part of the Hurricane batch as well, and I was not writing a lot of answers in my initial attempts. And the Hurricane batch helped me improve my answer writing because I was writing answers almost on the daily basis. So when it comes to answer writing and refining of the answers, Hurricane helped me. And then finally, sir, in the interview stage, I had some interaction with Puneet sir, and he was kind enough to spare time for me, and those interactions also helped, sir. Great. So we are glad that SOMP in various ways could help you in mains as well as in interview. Siddhak, since prelims is now just coming, it's just in 2 weeks, less than 2 weeks, prelims is coming. So we'll be devoting more time to prelims. As in, we would like to know your experience in prelims and how what you have learned in prelims and how the students can benefit from those learnings.
right? Uh, Uh, mhm. SIDAQ, you have seen prelims evolving, right? So let's say you've started. Also, your first attempt was in which year? 2018, sir. 2018. Yes. Yes, so first attempt was in 2018 and you gave your attempt in 2024. And in these years, prelims has evolved a lot, right? What used to be true in 2018 is actually not in toto, it is not true in 2024, right? Uh, what would you like to share with us with respect to this evolution of prelims? Uh, Sir, you're completely right that the paper has evolved over the years. But sir, the manner or my approach when it comes to prelims preparation, I did not tinker with the approach very much. So the approach largely remained what it was back in 2017, 2018. And sir, my approach, if I were to divide it into two parts, the planning part and the implementation part. If I talk about the planning part first, what I did was that I divided the subjects of prelims in three different heads. Just for the sake of convenience, let's call them three different buckets. So in the bucket one, I kept polity, economy, geography, and modern history. And the reason why I clubbed these four subjects together is that I found these subjects as relatively easy to understand. Secondly, they carried a high weightage. Around 50% of the questions in the prelims examination, they come from these four areas. And thirdly, I felt that my accuracy when it comes to solving the questions of these four subjects is relatively high. So I bunched these four subjects together. In the second bucket, I kept science and tech, AMAC, ancient medieval and art and culture, and environment. And the reason why I bunched these three subjects together was that I found these subjects as relatively difficult as compared to the subjects that I previously mentioned. Secondly, my accuracy was relatively less while solving the questions from these three subjects. However, they carried a good weightage as well. Combined, they carry a weightage of around 35%. And in the third bucket, I kept current affairs and miscellaneous parts, schemes, sports, etc. So, sir, my approach was that I will prepare for the bucket one subjects very well. I will do multiple revisions for those subjects. When it comes to the subjects in the bucket two, they were second in priority. However, I made sure that I put relevant focus there as well, because majority of the competitive edge that a candidate gets in the prelims examination is from those subjects. And when it comes to the current affairs, I try to limit my sources. PT 365 365 was the source that I largely referred to, but I revised it around 2 to 3 times. So this was my strategy when it comes to So the planning part. overall, Siddharth, yes. Overall, what I can understand is that without those four subjects, those four fundamental blocks of the prelims, you cannot even hope to reach closer to the cutoff. And without doing the second bucket, you cannot be comfortable enough after the exam has happened that okay, you would be clearing prelims, let's say with a margin of +7 +10 marks. So it would be the foundational should be those four subjects, but that should not restrict you in today's time, and you need to go into that second bucket decently so that you are well above the cutoff. I think you analyze this beautifully, sir. Actually, sir, if we do the maths, coincidentally, I was watching one of the videos of a co-aspirant who is now into teaching, Pallavi Sangle, and she did the analysis of the last 5 prelims years, and she divided the questions in among various subjects. And according to that, in the last 5 years, on an average, there are 17 questions from polity, 13 each from economy and geography, and 5 from modern history. That makes a total to 48. Just for the sake of convenience, let's say 50. Now, these 50 are relatively easy questions. Say that 5 questions Right. out of these are tough, and I decide to skip them. I'm left with 45 questions. Now, if there is any serious candidate, I will expect him or her, or in during my course of preparation, I will expect myself that I should not mark more than 20% of those questions as wrong. 9 questions out of 45. So what actually happens is that you get 36 right and you get 9 wrong. If we
do the maths, then 36 into 2, 72. For 9 questions, 6 marks get deducted. So you get 66 marks just from these 4 subjects. And as you said that it is very important, it is mandatory that you prepare the subjects in bucket 1 well, but they're actually not sufficient to get you across the cutoff. Cutoff, I think, was 87. So now you need another 21 marks, which is a bare minimum. However, the ideal case scenario should be that you should sit at a comfortable position, and that comfortable position is more than 15 marks above the cutoff line. That is around 100 marks. And if you want to get that score of 100, you should have a decent grip over the subjects in the bucket 2 as well. So this is where the bucket 2 comes in. It helps you to cross that cutoff and to sit at a comfortable position so that you are not anxious post the prelims paper. Because if you are in that border zone 85 to 90, then for the next 20 days, you are not just tensed, but you are anxious as well. And you're not able to Exactly. give 100% during those 20 days, the 20 days after the Yes. prelims result. So if you're So getting into the Siddharth, three subject, that's yes, yes, sir, yes, please, please, please. please continue. So yeah, So that strategy, which probably some students either unknowingly follow, that okay, if I do these particular 4 subjects decently, I'll be able to reach up to that cutoff, or maybe close to that cutoff, and maybe I'll write the mains. This probably is not true in any scenario, at least in the current context, right? yes, sir. Okay. And Siddharth, you have seen prelims evolving. Okay, some things stayed consistent, right? But you might have changed at least 10% of your strategy, maybe 5% of your strategy, considering that, okay, this is how prelims is evolving. And okay, we know that, okay, these things are important in terms of that they are similar to what they were last year. But would you like to shed some light on what changed in your preparation, especially in the last 2, 3 years, wherein prelims has increasingly become more difficult? So there was actually no radical change when it comes to either the sources or the manner in which I was preparing. The element that made the prelims examination more tough or tougher was the type of options that they started giving in the last 2 years. One only, two only. That made elimination a bit difficult. But actually, there is no counter to that. The only counter to that is if you are able to study well and be more thorough with different areas, then elimination becomes a bit easier. Otherwise, we were not able to eliminate the way we were doing it pre 2022. So as far as strategy or the manner in which I was studying, it largely remained same. Okay, so the strategy, the manner in which we prepare, that is more or less consistent, and it is your study which will eventually help you out in the exam hall, right? Siddharth, you have seen prelims, and you have seen, let's say, if you were to give another attempt, uh, and a widely popular opinion is previous year questions that needs to be practiced, that needs to be analyzed thoroughly. But let's say you are giving an attempt in 2025, and someone tells you that analyze PYQs, and you would be saying that okay, मैंने तो 3 साल दिए ही हैं attempt, मैं क्या करूंगा analyze करके PYQs को. So what do you think for an aspirant? Okay, for a new aspirant, previous year questions are a must. You cannot go without them. But let's say for someone like you who has seen prelims, are PYQs still your guide? Do you again refer to them multiple times to just keep your preparation in check? Sir, I think when it comes to preparing for UPSC in both prelims and mains, the previous year questions, they are the North Star. They are the guiding light. And in fact, one day prior to the actual exam, I used to solve the previous year questions of 2 previous years. That is, if I were to appear for, say, this year, then I'll be doing the question paper of 2024 and 2023 one day before the actual exam. Because it uh, helps keep me focused on the type of questions that UPSC has actually asked. So this helped me in the actual examination as well. The orientation of the mind is such that it helps when you're solving the real paper real time. So, and other than this, sir, I did analyze previous year questions in every year. For example, if I were to tell you certain things that are right now coming to my mind, when you solve the previous year questions of 5 to 7 years prior to the year in which you are appearing,
you come across certain trends. For example, in case of polity, there are certain areas which do get repetitively asked. For example, constitutional form of government, money bills. In case of geography, I think in the last 5 years, thrice 21st June question was asked in one or the other form. Right. Similarly, from science and tech, mitochondrial diseases, pro-nuclear transfer, these are the themes which do get repeated. So you do understand that which are the areas which need to be focused more, or which are certain favorite themes of UPSC. Even if you get 3 or 5 questions out of those themes, it is more than enough, sir. And it also helps to make keep you oriented in the right direction, the previous year questions. So they do help, sir. They do help quite a lot. Great, Siddharth. So this is what my viewpoint as well. This is my viewpoint is that no matter whether you are giving your first attempt or you're giving second or third, but you cannot go into the exam hall, be it prelims or mains, without actually knowing deeply the PYQs. Siddharth, coming to PYQs and continuing with PYQs, there is an evolving, there is, I would say, a continuous trend of elimination being, the you can say the catalyst, or some of the students take it as the primary force in tackling the question paper in the exam hall. Over time, over the years, I feel UPSC has consciously phased down the elimination techniques, and it is very conscious now of that. Okay, certain elimination techniques will not apply. With respect to this, what would you like to say to our students? Sir, as the elimination technique is slowly getting eliminated, I think the importance of in-depth study is increasing. Earlier, what used to happen if there are 3 options, say I eliminated the third option, then many a times I used to come at the right answer because option 3 was in 3 different options. So if you eliminate it, you get the right answer. But since now this trend is slowly fading away, I think the importance of studying concepts in depth and having more peripheral knowledge, that is becoming more important. For example, sir, in 2024 prelims, I remember there was a question on fig, that which is the organism which is important. Uh, Oh, four evolved. tree Name of 4 trees was given, and the question was that there is a certain organism which is important for the reproduction of these trees. So, which is that organism? So it was in my peripheral memory. I do not know that where I read it, fig and wasp. So that helped me to get that question correct. So I think the more you read and the in-depth you read, that will help you to get more questions correct. Uh, Two things, Siddharth, here. One, although the elimination techniques have faded out, and I think they should fade out because then you create a level playing field. Uh, but logics stay as relevant today as they were back 2 years back, 4 years back, 6 years back. Would you agree to this? Yes, sir. Perfectly. Yes, and let's say you mentioned one question, fig and wasp. That Mhm. was somewhere in your peripheral memory that, okay, fig and wasp you have read somewhere. But let's say a student who is not aware of this thing, nothing is coming to his mind in the exam hall. What should he or she do? Should he attempt that question or should he leave that question? Sir, I think if the candidate is completely clueless, then the better option would be to leave that question. Because I think, sir, it is by not knowing something and just going for a random guess, you stand to lose out 0.66 marks. And I have friends who have actually not been able to secure a position in the list because of those marks. So the better option in this case would be to skip that question if you're completely clueless. Exactly. This is what I feel as well, that if you're not knowing it, even if you're not knowing it comfortably, or let's say just knowing it 1 or 2%, and that too very vaguely, the better option is to skip because then you are moving towards negative 0.66 marks. There was, Siddharth, in fact, sir, another there were important. just to add to that, Yes, yes, please. there were multiple questions in prelims 2024 in which many candidates were clueless, like PFAS. Now, most of my friends they also skipped that question, but their
might be a few who might not be able to resist the temptation कि नहीं यार कोई ना कोई तो मार ही देते हैं. So they are losing out 0.66 marks. The chances of that are very high. So if you're completely clueless, mark a big cross on that question. I used to mark a big cross कि अब इसके बाद इसको देखना ही नहीं है. सेकंड रीडिंग में देखना ही नहीं है कि पता ही नहीं है कुछ भी उसके बारे में, तो छोड़ना ही है उसको. Right. एंड सिदक सिंस वी आर स्लाइटली ऑन 2024 का पेपर, तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं. देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल. देयर वर थ्री टेबल्स गिवन एंड obviously one of the reference has been made to India yearbook for that question, right? That okay, this was solvable from India yearbook. But let's say a student like you, who has seen prelims, who has prepared decently well, were you able to solve that question in the real exam hall, or No, was sir. it I out think of the reach? I skipped that question. So even someone who has read a lot, given prelims a lot, you and despite that knowledge, that information being in the India yearbook, you still skipped that question, right? Right, sir. Because Why I I'm think the asking you this options. question is, Mhm. yes, The yes, options please. in those in that question, if I remember correctly, was one of the statement is correct, two are matched correctly, something like that. So again, sir, for that question, you need to have complete information to mark that question right. And if you do not have complete information, then again, the chances of losing out 0.66 marks are more than, or the odds are against you in that question. So Odds are again, sir, I against. think it's better to skip those questions. Why I asked you this question, Siddha, is because just because by saying or portraying one question as to coming from India yearbook, and that too a very difficult one, uh, the market tends to portray that okay, some market tends to portray that okay, this is the direction in which your study should move in, considering that one question. And a new aspirant, or maybe someone who has not analyzed the things well, he or she tends to navigate in that direction. So you are completely against it, right? Yes, sir. I think when it comes to preparation, you do try to read different sources, but you need to do the cost benefit analysis as well. For example, doing government schemes is important. Knowing about them is also important. But if we look at the examination, doing three different booklets just for schemes, it is not a good idea. The better thing that you can Right. do is probably revise the core subjects one more time instead of reading three different booklets or three different parts of schemes. So I think it's important to prioritize your time. Reading wide is always good, provided you have already cemented what you have read earlier. Exactly. Exactly. Coming to the next part of this prelims thing, mocks are quintessential in this preparation. But again, the thing is, I feel they are a double-edged sword. वो आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे और फायदा भी करवा देंगे. How do you think, Siddhak, or what is your analysis about mocks being an indicator about your actual prelims potential? That okay, let's say you're scoring a particular range of marks in mocks. Uh, do you think that has replicated in most of the attempts, in some of the attempts, in the actual exam hall, in the actual paper, in terms of the score range? Sir, I think it depends upon the type of mocks that you are giving. There are certain institutes that are making the question paper, the mock questions, very tough. So if you get say 80 or 85 in those mocks, I think it's a good score. But if the level of the questions is not that advanced, then probably if you're getting around 100, that might not be still sufficient to get you across the line. So I think it depends upon the type of questions. But having said this, sir, I think mocks are important because it helps you analyze your level of preparation. Whenever I used to do a subject, say I start with polity, I will write two sectionals of every subject that I'm preparing. I will complete half Lakshmikant, then give a sectional test, then complete the second half, then give again a test. And then I'll take another day to revise complete Lakshmikant or polity, and then give a full length test of polity, just the polity portion. So my approach to mock test was like this: two sectional per mock, and then a complete test for that subject. So this actually made sure that my preparation is oriented in the right direction. Plus, I am consistent. I used to keep
a schedule of my mocks that every third day I'm going to write a mock, depending upon the subject, but generally it was one mock every third day. So I think it also helps you to ensure that your preparation is going at a right pace. So in this manner, sir, mocks help me. So revising testing, that was your core strategy, at least for Yes, sir. those first two buckets, right? Mhm. Yes. And one thing, sir, which I was Sid, doing is I was revising very frequently. This year I gave around 100 days to prelims preparation. I remember I started with polity and I said that I'm going to complete polity in 8 to 9 days. So on ninth day, I gave a full length of polity, and then on the 30th day again, I revised polity for 1 or 2 days, gave a test. On the 60th day, again revised polity, gave the test. So there were multiple revisions and multiple tests spanned across those 100 days. so revision comes out to be the most crucial key if you want to tackle prelims very confidently in the exam hall. Yes, sir. Siddharth, let's say we are just 12 days away from this year's prelims, and let's say a student is scoring around 70, 75 marks in the mock, and we do not know when I say we, I mean the student does not know what is the nature of the mock. That could be a very difficult mock, but without before giving the mock, he was decently comfortable about his preparation, he was decently confident about his preparation, he has revised, he has seen the things, PYQs have been done, but in mock he got, let's say, 70, 75. Should he be worried about it, or should he just say that, okay, let me just analyze my mistakes and I'll move forward? Sir, I think in the last 2 weeks, we should try to keep our mind calm because now we cannot make a radical change to our preparation level. So a better thing would be to revise the core subjects in the next 10, 12 days and stay confident. One of the things that I'll suggest to the people who are writing prelims this year is that you should consciously tell yourself almost every day that my preparation level is well. Have confidence in your preparation and say yourself that I'm going to clear this examination. And the reason, sir, why I'm saying this is there are occasions when one becomes anxious in the examination hall. And that is actually the time when the subconscious mind comes in. The conscious mind might take a backseat, and if we have trained our subconscious mind in such a manner कि यार मेरा तो पेपर निकलना है, that thing really helps. Because as of Right. in 2024 attempt I got set A, and that started with very easy questions of geography. But if say somebody got set C जिसके questions शायद मुश्किल थे शुरू वाले, तो थोड़ी टेंशन हो सकती है, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है. बट अगर लास्ट वाले 2 हफ्ते में वी हैव कॉन्शियसली टोल्ड अवर सबकॉन्शियस माइंड की यार तैयारी अच्छी है, पेपर निकल जाएगा, उस मोमेंट में हेल्प होती है उसकी. और if in the last 10 days we are feeling underconfident, worried, there is a there is self doubt within us, that would hamper our prospects in those 2 hours. So So the my coming to advice would be to stay. confidence, Mhm. सॉरी टू कट यू, कमिंग टू कॉन्फिडेंस, अगर हम इस चीज जो आपने बोला अभी, अगर हम इसको ऐसे लें कि अगर आपको पहली बात कॉन्फिडेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के बारे में, एंड कॉन्फिडेंट नहीं, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है कि कोई भी उसको डेंट ना कर पाए, नो इवेंट वेदर हाउस एवर डिस्क्रीट इट इज, उसको वो डेंट ना कर पाए. तो अगर हम इस चीज को इन द एग्जाम हॉल ऐसा देखें, लेट से आप प्रीलिम्स 25 दे रहे हैं, Mhm. कट ऑफ लेटस जस्ट एज्यूम टू बी अराउंड 90, एंड अगर आपको पहले 55 क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेट्स जस्ट एज्यूम अ वेरी हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर आपको पहले 55 क्वेश्चंस भी नहीं आते, तब भी आपको सबकॉन्शियसली इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि नेक्स्ट 45 मैं कर लूंगा. एग्जैक्टली बिल्कुल राइट. सर. इसके अंदर ना अगर क्वेश्चन टफ आते थे, जैसे मेरे ख्याल से 22 में द पैटर्न ऑफ द एग्जाम गॉट चेंज्ड. जब इन्होंने पूछा था वो वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू आर करेक्ट. Those questions were very tough to solve, and everybody was unprepared. The one thing that I told myself is जितना ये मेरे लिए टफ है उतना ही बाकियों के लिए टफ है. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यूपीएससी ने टॉप 14,000 स्टूडेंट्स को उठाना टू राइट मेंस. जितना मेरे लिए टफ है उतना ही उनके लिए टफ है. पहले भी 14,000 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखना था, अब भी 14,000 नहीं लिखना. सो दिस एक्चुअली गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन
कि जितना मेरे लिए मुश्किल है एक उतने चीज उनके लिए इसमें मुश्किल है, एंड ये सर प्लीज। हाँ, एक चीज इसमें जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई यूपीएससी की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो वो आप ये मत समझिए कि वो आपके लिए ही वो क्वेश्चन उधर ड्रॉप कर रहा है। जितना वो आपके लिए मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। जितना वो आपके लिए आसान है वो सबके लिए आसान है। इज इट राइट टू से दैट, सिद्दक? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। राइट। सिद्दक, ऑल्दो नॉट वेरी रेलेवेंट एट दिस पॉइंट कंसिडरिंग 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, बट एक स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि आप सिर्फ मॉक्स पर ध्यान दीजिए। 100 मॉक्स कर लो, 150 मॉक्स कर लो, 10,000 क्वेश्चन कर लो, 15,000 कर लो। राइट। एंड दिस इज वॉट योर होल स्ट्रैटेजी शुड बी अराउंड। वाइल आई फील कि ठीक है, एक्सेप्शनली यू माइट क्लियर प्रीलिम्स थ्रू दिस स्ट्रैटेजी, बट डू यू एडवोकेट दिस स्ट्रैटेजी? मतलब आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? सर आई थिंक इन नाइदर इन केस ऑफ प्रीलिम्स नॉर इन केस ऑफ मेंस, मतलब ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली स्ट्रेटेजी, आई डू नॉट थिंक दैट इट हेल्प्स। पाथ वही है कि आपको सब कुछ पहले पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद मॉक्स देने चाहिए, एंड नॉट लर्निंग थ्रू मॉक्स। मॉक्स आर बेसिकली अ राइट। टेस्ट टू हेल्प you analyze what you have read, whether you have reasonable amount of grip over it or not. But trying to create a grip through the mocks, that is not a good strategy. फंडामेंटल राइट्स को लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना चाहिए, ना कि मॉक्स से। राइट। बिल्कुल 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 सर। एग्जैक्टली। सिद्धक, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर कि ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की थी? बिकॉज बहुत एक एक हैप्पैज़ार्ड और एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड स्ट्रैटेजी है विद रिलेट टू करंट अफेयर्स। कुछ समथिंग यू वुड लाइक टू शेयर कि ये आपके लिए काम किया? सर आई थिंक करंट अफेयर्स को लेके अननेसेसरली बहुत ज्यादा हाइप है। उतनी हाइप अगर हम, इफ वी एनालाइज द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 5 years, तो वेटेज इज जस्ट 15%। Around 15 questions are coming from current affairs, and a lot of those are actually linked to the static knowledge. Static knowledge से भी हो जाते हैं। So one important thing is limit the sources for current affairs. I refer to PT 365 और उसी को किया बस, उसके अलावा और कुछ नहीं किया, बट उसकी मल्टीपल रिवीजन्स की। सो दिस एक्चुअली somehow helped me calm my nerves कि majority of the students इसी को कर रहे हैं, या हो सकता है इसके साथ एक और कर रहे हैं। मैंने एक को किया बट अच्छे से किया, और मोर और लेस जितने बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उतने ही मेरे भी हो जाते थे। तो बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे मैं भागा नहीं, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड अदर्स एज वेल नॉट टू डू करंट अफेयर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज। रिस्ट्रिक्ट देम टू जस्ट वन। मेंस के अंदर यू कैन एक्सपैंड देम टू से टू, बट फॉर प्रीलिम्स आई थिंक वन इज सफिशिएंट। And any prioritization subject wise you would like to give with respect to current affairs कि भाई at least ये कर लो, even if you're short on time? सर पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, दीज फोर आर इम्पोर्टेंट। ओके। करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा मुझे इंसिडेंट याद आता है। तो देयर वाज अ क्वेश्चन दिस ईयर रिगार्डिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था। डॉक्टर सचिंद्रनंद सिन्हा वाज द आंसर। एंड while that question was meant to be solved through Lakshmikant, a student came to me कि someone is saying कि ये करंट अफेयर्स में था इसलिए ये पूछा गया। क्या कहना चाहोगे आप इस पे? सर आई थिंक स्टैटिक नॉलेज डज बिकम अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स जब से 50 years कंप्लीट होते हैं, 100 years कंप्लीट होते हैं। सो दैट कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स व्हाई यूपीएससी आस्क दैट क्वेश्चन। बट इन एनी केस अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो वो वैसे ही हो जाना था। सो हो सकता है कि द ट्रिगर पॉइंट वाज बिकॉज इट वाज अ न्यूज, बट हैड यू डन द स्टैटिक पोर्शन वेल तो वैसे भी ठीक होना ही था उसने। तो मतलब मेन मेरा वही है सीधा तो। ये मानना है। हाँ, जी। प्लीज प्लीज। तो नहीं नहीं, मेन आप यही है सर, कंटिन्यू जो करिए। जो स्टैटिक में लिखा हुआ है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। मैं वही बोल रहा हूँ कि काफी बार करंट इवेंट्स ट्रिगर ही इसी कारण होते हैं, सॉरी स्टैटिक इवेंट्स ट्रिगर इसी कारण होते हैं क्योंकि कोई डेवलपमेंट होती है उनके साथ रिलेटेड। तो अगर करंट के ऊपर एक अच्छी ग्रिप है, इफ यू सीमेंटेड योर ग्रिप ऑन सॉरी स्टैटिक पोर्शन, तो वो ठीक हो जाएंगे वो। एंड लेट्स से सिद्धार्थ, हमने स्टैटिक एंड करंट दोनों में एस सिन्हा के बारे में पढ़ लिया, राइट? बट what my experience is, and probably you
would say something about it कि अगर आपको सॉल्व होगा ना क्वेश्चन तो आपको वो स्टैटिक से ही सॉल्व होगा क्योंकि योर मेमोरी विल फेच दैट थिंग फेच दैट पिक्चर फेच दैट इमेज फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स इटसेल्फ। वो करंट से आपको याद भी नहीं आएगा मैंने कहाँ पर पढ़ा था। वुड यू व्हाट वुड यू से हियर? Yes, sir. In my case, that would be correct because probably I've read लक्ष्मीकांत multiple times. But हो सकता है करंट अफेयर की बुकलेट 2 ही बार पढ़ी हो, बट लक्ष्मीकांत शायद आप 10 बार पढ़ ली होगी. So I जी think it would be easier to fetch the source of knowledge from Lakshmikant as compared to the current event booklet. सिद्धार्थ कोई स्पेशल सोर्स फॉलो किया हो? और ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं कि भाई जो लोग कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर करते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड दैट टू लेट्स से विद अ बफर ऑफ 10-15 मार्क्स मिनिमम, कुछ स्पेशल वो लोग फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सोर्स फॉर स्टैटिक और करंट अफेयर। आप इफ इट इज ट्रू आप बता दीजिए, इफ इट इज अ मिथ तो इसको डिबंक कर दीजिए। सर सोर्सेज वही हैं जो सब रेफर करते हैं, कोई अलग सोर्स नहीं है. बट आई डू थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी जर्नी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, you have actually read a lot of newspaper, और न्यूज़पेपर के कारण the amount of peripheral things that you know are comparatively more as compared to the people who are newbies or the who have just started their preparation. So you do get an edge there. But if you have done the static portion from the sources which are already available in the market for polity, Lakshmikant, Spectrum, if you have done these sources for geography, NCRT, then I think they are more than sufficient. The idea here is कि जो स्टैटिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन वही था. फिर वी हैड अ क्वेश्चन अबाउट थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर 21 जून. मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए. अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो प्रिपरेशन में फिर वो सिन है. और द सुसाइडल रीजन है वाई, फिर वो। हाँ जी, क्योंकि जो आपका कंपटीशन है उसकी बहुत स्ट्रांग ग्रिप है उन चीजों के ऊपर. एंड दिस इज बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अगर आप वही चीजें अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, और मोर देन सफिशिएंट है उससे. कट ऑफ की जो लाइन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई. सो मेरे सोर्सेज कुछ बहुत ज्यादा थे भी नहीं, बट आई थिंक द ओनली थिंग विच हेल्प मी वाज रिवीजन, frequent mocks, good analysis of the weak points, then refining them. So I think all those things have helped. सिद्धक इन रीसेंट इयर्स सीसैट भी एक विलेन के रूप में बनकर उभरा है, नहीं? इट हैज ट्रबल्ड स्टूडेंट्स सिंस 2021, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इन 2023 में तो नाइटमेयर ही हो गया था। Mhm. आपने क्लियर किया है सीसैट इन ऑल दीज इयर्स, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या फिर व्हाट योर व्यू पॉइंट इज कि अगले 10-12 दिन में एटलीस्ट इतना कर लो? ऑब्वियसली अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है सीसैट में तो उसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता, बट लेट्स से किसी स्टूडेंट ने ठीक ठाक अभी तक प्रिपेयर किया है, what would you like to say to them for the remaining 12 days कि भाई इतना कर लो, do this much and at least you'll clear the cutoff? Sir, actually, I am sorry of in case you are seeking some suggestions from me for CSAT. मतलब सर CSAT पे ना मैं बहुत ज्यादा फोकस करता नहीं था. द रीजन बीइंग मेरी कॉम्प्रीहेंशन शुरू से अच्छी थी और मैथ्स भी अच्छा था मेरा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद CSAT पहले अपने 5 अटेम्प्ट में मुश्किल से 5 घंटे मैंने उसको दिए होंगे, मुश्किल से 5 घंटे. इन दिस वेरी अटेम्प्ट आई थिंक आई गेव 3 or 4 days to CSAT. But I think since I previously had a good amount of grip over comprehension and maths, तो बहुत ज्यादा मुझे CSAT ने ट्रबल किया नहीं. So I'm actually not the right person to give a strategy for CSAT preparation. इवन इफ लेट्स से सिद्धक आप एकेडमिक सेंस में कंफर्टेबल थे सीसैट के साथ, वेदर इट इज मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन, बट Mhm. एग्जाम के अंदर 2.5 से 4.5 के बीच एक अलग चैलेंज होता है आपके सामने, एंड वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु डिस्पाइट बीइंग प्रिपेयर्ड वेरी वेल दे समवेयर फॉल्टर डाउन। तो एग्जाम में कुछ ऐसा था आपके दिमाग में कि नहीं भाई मुझे ये गलती नहीं करनी है पेपर में, सीसैट के पेपर में, कि मैं रुक जाऊं या किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम बिता दूं या ऐसा कुछ? Sir, the only thing which I did or which I told to myself was to stay calm. मतलब हो सकता है कि पेपर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है थोड़ी मुश्किल आ जाए. बट इफ वी आर काम ड्यूरिंग दोज 2 hours, अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली नॉर्मलाइज एंड दे वर्क टू आवर एडवांटेज. So this is something which I made sure that I'm very calm during those 2 hours.
सीसेट में स्पेशली वो चीज काफी हेल्प करती है, कॉम्प्रिहेंशन में भी और मैथ्स के क्वेश्चन में भी। सो यही सर मेरी सजेशन होगी कि शांत रहना। हो सकता है चीजें मुश्किल लगे, और ये, कॉम्प्रिहेंशन एक। हाँ जी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। कॉम्प्रिहेंशन बीच में से, आई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि कौन सा साल था, कॉम्प्रिहेंशन वाज अ बिट डिफिकल्ट। बट अगेन थॉट प्रोसेस वही रखना है कि ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट है। अगर इसमें मेरी एक्यूरेसी कम होगी आंसर्स की, तो बाकियों की भी कम होगी। सो दैट्स माय सजेशन सर। और ये कामनेस वाली चीज सिद्धक, इट इक्वली एंड मोर और लेस इवन मोर अप्लाइज टू जीएस एज वेल। हाँ जी सर, बिल्कुल। Actually, I'll like to share a instance. This was during my PPSC exam, Punjab Civil Services. I was a bit anxious in the prelims paper. और जो अटेंडेंस शीट होती है उसके अंदर आंसर शीट का नंबर और फिर उसके बबल्स भरने होते हैं। और आई डिड एन एरर एंड आई फिल्ड माय रोल नंबर, और वही बबल्स मैंने मार्क कर दिए, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एंजाइटी। और दैट क्रिएटेड सम इशू, वाइटनर लगा उसके ऊपर, थोड़ा मेरा टाइम खराब हुआ। उसके बाद सी सेट के पेपर में मैं गया, प्रोबेबली आई वाज एंशियस, और पता नहीं दिमाग शायद किसी और तरफ चल रहा था। 2 घंटे बाद मैंने सेम मिस्टेक दोबारा की, उसमें भी मैंने रोल नंबर भर दिया और बबल्स वैसे भर दिए। सो एक्चुअली एवरीबडी वाज स्टार्टल्ड इंक्लूडिंग द इन्विजिलेटर कि यार 2 घंटे बाद सेम गलती होनी नहीं चाहिए थी। बट समहाउ वो सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर कॉन्फिडेंट मैं था कि यार पेपर तो निकाल दूंगा मैं ये वाला। सो आई थिंक एंजाइटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट होती है सर एग्जाम से जस्ट पहले। बट बी काम, बी कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट स्पेशली ड्यूरिंग दोस 2 आवर्स। अलॉन्ग विद कामनेस सिद्धक, एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, शायद मे बी दैट इज अंडररेटेड या स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, वो है फोकस। अगर आप उन 2 घंटों में बिल्कुल लेजर टाइट फोकस बना सकते हो, तो पेरिफेरल थिंग्स जो आपके आसपास हो रही है वो काइंड ऑफ दे फेड आउट, एंड आप उस क्वेश्चन पे, उस स्टेटमेंट पे, उस वर्ड पे अपना 100% अटेंशन दे सकते हो। राइट। ये मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई पानी देने आया, टीचर इज लेट से कोई शीट भरवा रही है, तो उनका दिमाग उधर जाएगा, अटेंशन स्पैन दैट दैट माइग्रेट्स। डू यू थिंक दिस हैम्पर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप 2-4 सवाल आपके गड़बड़ हो जाते हैं। सर ये बहुत सही चीज बोली आपने। इनफैक्ट अब मैं क्वेश्चन पेपर अभी देख रहा था, 2 क्वेश्चंस थे साइंस एंड टेक के, जो आप जैसे आप बोल रहे हो ना, यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू स्टे फोकस्ड एज वेल। जैसे एक क्वेश्चन था ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स वाला, आई हैड नो क्लू कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या है। बट you are able to do the word breakdown only if you are both calm and you are focused during that point of time. अगर उस टाइम पे आप ये सोच राइट। लिया आपने कि यार मेम्ब्रेन तो कुछ वाटर ट्रीटमेंट के लिए हो बायोटेक्नोलॉजी सकता है। वाला है। हाँ, तो ये वाटर ट्रीटमेंट इसका आंसर था कि मेम्ब्रेन है तो कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन हो रही होगी। सिमिलरली उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, पंप स्टोरेज हाइड्रो वाटर, अब उसके अंदर ही स्टोरेज दे रखा टर्म में ही, और आंसर में भी अगर स्टोरेज आपने देख लिया, फोकस है आपका, कॉन्फिडेंट हो, काम हो, तो मतलब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ही ठीक होते हैं सर। अगर आप एजिटेटेड हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चंस ठीक। और एक और क्वेश्चन सिद्धक मुझे याद आता है, एक आरटीजीज वाला सवाल आया था, हम्म। थर्मो, रेडियो थर्मो समथिंग जनरेटर। उसमें द ओनली वर्ड विच यू हैड टू पिक वाज कि भाई फिजन नहीं है, फ्यूजन है। एंड द मोमेंट यू पिक्ड अप दैट वर्ड, सवाल हो गया था। एंड अगर हम काम नहीं है, फोकस नहीं है, तो भाई सब नंबर गए। राइट। राइट। ऑलराइट सिद्धक, सिद्धक, ये लंबे टाइम में, या फिर लेट से किसी ने 2 अटेम्प्ट भी दिए, 3 अटेम्प्ट भी दिए ना, प्रिपरेशन ओवर टाइम बोरिंग होने लग जाती है। एंड ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स को कितना ही कहें कि एंजॉय द प्रिपरेशन, एंजॉय द प्रिपरेशन, बट वो कहीं ना वही सेम सोर्सेज, इट टेंड्स टू गेट बोरिंग। आप क्या, इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है? सर आई थिंक सही बात है ये वाली। आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट द प्रिपरेशन डज बिकम बोरिंग। सेम चीज बार बार कर रहे हैं, रेपिटेटिवली कर रहे हैं, सो the element which makes something interesting that gets missing in the process if you are doing the things again and again.
But I think, sir, the biggest source of motivation is incremental progress. If in your course of journey you see incremental progress, you see yourself growing every day, every week, आपके marks अच्छे आते हैं, you get good comments from the from your mentor, that thing helps keep going. Plus, if you have the support of your family members, in this case, sir, I was very blessed. I had complete support of my family members. So these are the things at which I think help keep the candidate going. I had friends in this journey who were passing through similar phase. So somehow my peer group also motivated me. So if you have good peer group, supportive parents, and if you're progressing in the journey, I think that acts as a fuel and helps you keep going. मतलब उस सर्कल में ही आपको चीजों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देना, जस्ट टू ब्रेक दैट मोनोटनी एंड बोर्डम, रादर हम्म, देन कि आप नए नए एलिमेंट्स को ऐड करते रहो। क्योंकि कुछ हम्म, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी ऐसी रहती है कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, अब स्पेक्ट्रम बोरिंग हो चुकी है, तो प्लेसिव टू पार्टीशन पढ़ लेते हैं, हम्म, फिर कोई और किताब पढ़ लेते हैं, थिंकिंग कि ये बोर्डम ब्रेक कर देगी एंड मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि भाई आपने पढ़ तो लिया है नया सोर्स, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इट, एंड समवेयर यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर ओवरऑल प्रिपरेशन, इफ नॉट प्रीलिम्स एटलीस्ट मेंस पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है फिर। राइट। तो ये नहीं करना है, राइट? हाँ जी सर, आई थिंक लिमिटिंग द सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना, इट इज मच मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू रीडिंग थ्री डिफरेंट बुक्स एंड डूइंग देम जस्ट ट्वाइस। रादर देन दैट, रीड वन बुक बट रिवाइज इट 5 और 6 टाइम्स। मतलब मेरी लक्ष्मीकांत जो बुक थी उसका हाल इतना बुरा हो गया था कि आई हैड टू बाय अनदर वन। सोर्स नहीं बदला, उसी को इतनी बार हाईलाइट कर दिया था कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें से। सो दैट आई थिंक इज मच बेटर एज कम्पेयर टू रनिंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। आई गेस सबकी लक्ष्मीकांत के साथ ये हो ही जाता है। प्रोबेबली सर। सीधा दो आई वुड से लास्ट टू क्वेश्चंस टू यू, कि जो आप विद योर विजडम एंड विद योर एक्सपीरियंस आप कुछ उस पर बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड कर पाएंगे। सम स्टूडेंट्स अगर मान लो उनका आज इंटरव्यू रिजल्ट आया, रैंक मिल गया, एंड लेकिन डिजायर्ड नहीं मिला, मतलब वो दोबारा पेपर देंगे, या फिर जिसका अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ, एंड अगले हफ्ते मान लो प्रीलिम्स है, वो लोग फिर भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, राइट? एंड ये रिपीटेडली कंसिस्टेंटली वो लोग करते रहते हैं। एंड देर आर सम स्टूडेंट्स जो कि अगर 5 महीने भी तैयार कर रहे हैं रिपीटेडली, हर साल 5 महीने तैयार कर रहे हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं दे विल पॉल्टर डाउन। ऐसा क्या है दैट सम आर कंसिस्टेंटली क्लियरिंग, सम आर कंसिस्टेंटली नॉट एबल टू क्लियर? क्या आपका क्या इस पे व्यू पॉइंट है कि क्या वो एलिमेंट है जो करता है ये सब चीजें? Sir, I think when it comes to preparation, again, there are two elements to that: planning and implementation. I think majority of the people are able to plan the things correctly, but उसको implement नहीं कर पाते. The important thing is implementation. Once you have prepared a plan, you have to ruthlessly implement that. और there are a few people who try to perfect their plan. मतलब प्लान करने में ही कुछ हफ्ते लगा देंगे कि यार एक बार परफेक्टली इसको प्लान करना, और परफेक्ट प्लानिंग कुछ होती नहीं है इसके अंदर। सो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। वंस यू हैव प्लान समथिंग, एनालिसिस कर लिया, चीजों को प्लान कर लिया, उसके बाद डू नॉट थिंक कि मेरी अप्रोच गलत था या जो मैंने प्लान बनाया वो गलत था। वो बिल्कुल ठीक है। नाउ इट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट। इट इज नाउ टाइम टू स्टडी। इट इज नाउ टाइम टू रिवाइज, गिव टेस्ट, एनालाइज योर वीकनेस। तो जो लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, आई डू नॉट थिंक कि उनका प्लान गलत था या उन्होंने चीजों को गलत तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में ही है सर। मतलब अगर कहें कि अगर यूपीएससी में 1000 सीट हैं तो 1000 प्लान होंगे, लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज बिल्कुल। वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल, क्योंकि प्लानिंग करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं बचता है। हम्म, एक इम्पॉर्टेंट की जो मुझे इसमें लगती है ना, वो है फियर। कुछ लोग बहुत डरे रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब हाउ डज फियर एज अ ट्रेट play out its game in this whole UPSC, let's say for prelims we consider? डर। सर मतलब मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सॉरी, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब
मैं इस चीज के लिए हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहता था कि यार ये वाला अटेम्प्ट हो सकता है खत्म हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा इस अटेम्प्ट में से। जब आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो ना, कि अगर चीजें वर्कआउट नहीं भी की तब भी कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा, अगला ऑप्शन दे लूंगा, दे सकता हूँ मैं, या कुछ और कर लूंगा। तो सर साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं टेंशन कम हो जाती है। तो मैं तो अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करता था कि यार नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। इस अटेम्प्ट में थोड़ी सी टेंशन ज्यादा थी बिकॉज दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। बट आई थिंक सर यू हैव टू समहाउ कंट्रोल योर नर्व्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करके करो या जैसे मर्जी करो, वो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फियर दिमाग में है, रहता है, सबके रहता है, लेकिन उसको इतना हावी नहीं होने देना कि वो आपके अटेम्प्ट को ही खराब कर जाए। क्योंकि इवेंचुअली you'll have to control your nerves in those 4 hours. हम्म। एंड जो मैं इसमें मुझे एक चीज सही लगती है वो ये लगती है कि भाई यूपीएससी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, तो आपको पर्सनली उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। सिद्धार्थ, फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग प्रीलिम्स इन 12 days। कुछ बस बिल्कुल कुछ चंद शब्द जो आप कहना चाहेंगे, बस ये कर लो। सर आई थिंक सबसे पहले तो द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज टेम्परामेंट। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10-12 days, एज आई सेड अर्लियर, स्टे वेरी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, एंड टेल टू योरसेल्फ कि मैंने मेहनत अच्छे से किया, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस इज नंबर वन, टेम्परामेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज, since you still have 10 to 12 days, focus more on on revision, especially revision of the core subjects. Because if you will mark the questions incorrect from these core subjects, polity, geography, economy, you are going to miss out a lot on the competition. सो जो ये वाला टाइम है इसके अंदर नया तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इसको 2 या 3 बारी और रिवाइज कर लो। So this, I think, sir, is something which could help the aspirants appearing for this year's prelims. Should they be referring PYQs in the coming days? Just let's say for some time, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Yes, that could help, sir. That could help to make sure that you are oriented in a manner in which UPSC is asking questions. So you can either do the questions daily, say 15 questions daily, or something which I did on the last day, two papers of the previous years. Either of them would work. Great. We have had a wonderful conversation, Siddharth, and काफी चीजें आपने बहुत ही, and considering कि you are someone who has experienced the things year wise, और जहाँ जो इनसाइट्स आप दे सकते हैं शायद शायद कोई दे पाएगा, एंड बहुत ही अच्छे से आपने चीजें समझाई। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? मोर और लेस तो मुझे लगता है सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? सर there is nothing very specific at the moment, but I think prelims preparation को लेकर more or less ज्यादा चीजें कवर कर ही ली हमने। हमने कर ही लिया है। थैंक यू सो मच सिद्दक, बहुत ही एनलाइटनिंग और एक वैल्यूएबल टॉक थी, जिससे मतलब थैंक्स अ आई लॉट सर। होप कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट इन द जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, दे वुड बी एबल टू एटलीस्ट काम डाउन देयर नर्व्स and good give a good prelims, and the students who will be giving next prelims, at least they can take out some important aspects from your experience कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है। Thank you so much, Siddharth. थैंक यू सर, uh, थैंक्स अ लॉट। SOMP and me wishes you all the best for your administrative journey, and I know you will be a wonderful administrator. थैंक यू सर। Thank you so much, Siddharth. Thank you. थैंक्स।